So next question number 10. Three x square minus 4 is equal to 0. तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 3x स्क्वायर में से हम लोग एक काम करते हैं, x कॉमन निकाल, क्या करते होगा, x कॉमन निकालेंगे। तो ये x कॉमन, 3x माइनस 4 प्लस 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1, 3x minus 4 equal to 0. Therefore, x is equal to minus 1. X is equal to 4 by 3. So, 0 of the polynomial are minus 1 and 4 by 3. Now relationship alpha plus beta should be equal to minus b by a. तो हम चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस 1 प्लस 4 by 3 should be equal to minus 3 plus 4 1 by 3. And what is the value of b by a? Minus b by a, minus 1 by 3. This is the value of a and this is the value of minus 1. b का वैल्यू क्या, माइनस 1, a का वैल्यू क्या, 3. तो ये that is equal to 1 by 3. ये तो समझ गया। और अल्फा इंटू बीटा should be equal to c by a. तो देखते हैं अल्फा क्या है, अल्फा मेरा माइनस 1 इंटू 4 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3. व्हाट इज c बाई a? c बाई a का वैल्यू चेक करेंगे हम लोग। c क्या है, माइनस 4, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर c इज माइनस 4, a इज 3, तो माइनस 4 बाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले मैं मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको बता देता हूं, अगर जिन बच्चों को दिक्कत होती है मिड टर्म स्प्लिट में कि इसको स्प्लिट कैसे किया जाता है, ये है मिड टर्म स्प्लिटिंग प्रोसेस। इसमें करना क्या है, 3 इंटू तो मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए मैं बताता हूं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को हम क्या करेंगे, तो 3 इंटू 4 हम करेंगे, दैट इज इक्वल टू 12, और इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 का प्राइम फैक्टर होता है, जब मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूंगा ट्वेल्व इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3। इन्हीं को यूज करके मेरे को प्लस माइनस करके ये टर्म्स लाना है। यहाँ पे क्या है, माइनस 1, या तो 4 माइनस 3 तो 1 होगा, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 होगा। मतलब इन प्राइम फैक्टर को यूज करके मेरे को ये पूरा का पूरा लाना है, ये होता है प्राइम फैक्टर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर
11 5x square plus 10x. Here a equal to 5, b is equal to 10, c is equal to 0. 0 because c में दिया हुआ 5x square plus 10x equal to 0. x कॉमन निकालेंगे तो 5x plus 10 equal to 0. Therefore, x is equal to 0 or 5x plus 10 equal to 0. X equal to minus 10 by 5, that is x equal to minus 2. Therefore, 0 of the polynomial are 0 and minus 2. ये हम लोग चेक करना होगा कि इनका वैल्यू सही है कि नहीं. रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा should be equal to minus b by a. What is alpha? 0 plus beta minus 2 should be equal to minus b by a. Minus b क्या है? 10 by 5. So minus 2 is that is equal to minus. And alpha beta should be equal to c by a. What is alpha? 0 into minus 2 should be equal to c by a. C 0, a is 5, that is 0 equal to 0. ये भी प्रूफ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हम बना लेंगे जल्दी से. So question number 12. Eight x square minus 4. Here a equal to 8, b is equal to 4. Therefore 8x square minus 4 equal to 0. जब हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. 4 इक्वल टू 0 या 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. 4x स्क्वायर इक्वल टू 1. x square equal to 1 by 4. So x is equal to plus minus root 1 by 4. X is equal to plus minus. So alpha is equal to plus half and minus half. ठीक है. Now alpha plus beta ये रिलेशनशिप हो गया.
is equal to minus b by 8. ये प्रूफ करना है. What is alpha? What is beta? Minus half. And what is b? Minus 4 by 8. So this is 0 and this is also 0. Half. Oh, it's alpha is 0 actually. This means alpha is equal to 0. Alpha is 0. So this 0 is equal to minus half. Here. अल्फा क्या है? अल्फा मेरा 0 है और बीटा मेरा हाफ है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 12. Here A is equal to 8, B is equal to 0 and C is equal to minus 4. तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 8x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. तो जब हम लोग यहाँ 4 कॉमन लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2. 4 कॉमन 2x स्क्वायर minus 1 equal to 0. 2x square minus 1 is equal to 0. X square minus equal to 1 यहाँ 2 रहेगा. X square is equal to half. Therefore, x is equal to under root half, that is equal to plus minus 1 by root 2. Plus minus 1 by root 2. यहाँ हो जाएगा alpha equal to plus 1 by root 2. Beta equal to minus 1 by 2. now हम लोग को ये चेक करवाना होगा तो relationship is alpha plus beta should be equal to minus b by a. What is alpha? 1 by root 2 plus minus 1 by root 2 should be equal to b by a. 1 by root 2 minus 1 by root 2 root 2 1 minus 1, that is 0 by root 2, that is equal to 0. What is the value of b by a? b by a का value क्या हमारा minus b by a is equal to 0 by 8. Now alpha into beta, that should be equal to c by a. What is c? Minus 4. What is c? Minus 4. So 1 by root 2 into minus 1 by root 2
इज इक्वल टू माइनस हाफ और सी बाई ए भी हमारा कितना सी बाई ए ये भी माइनस 4/8 दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ। सो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। If alpha and beta are the zero of the polynomial ex equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relationship alpha square plus beta, find the value of k. So question number 30. Polynomial ex equal to 2x square plus 5x plus k kf. A is equal to 2, B is equal to 5, C equal to k. Alpha plus beta is equal to minus b by k, that is equal to minus 5 by 2. Alpha into beta equal to c by a, that is k by 2. कितना होता है? Now alpha plus beta is equal to क्या है? minus 5 by 2 है। Squaring both sides, squaring both sides alpha plus beta the square is equal to minus 5 by 2 whole square, that is alpha square plus beta square plus 2 alpha beta क्या लेना होगा 25 by 4 है। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा क्या है? एक अल्फा बीटा k by 2 है, तो यहां हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस इसको तोड़ के लिखना अल्फा बीटा, इसको भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 25 by 4। इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ है कितना 21 by 4, 21 by 4 प्लस और ये कितना दिया हुआ k by 2 इज इक्वल टू 25 by 4। जैसे k by 2 equal to 25 by 4 minus 21 by 4, that is equal to 4 by 4, that is equal to 1. Therefore, k is equal to 2. हम लोगों को क्या हुआ था? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k is equal to 2 निकलेगा।